Hi guys, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me, your host Nitin. तो guys, finally आज हम हैं मोटोवर्स में और हमारे सामने displayed है the electric Himalayan. Yes, the much awaited bike from the house of Royal Enfield. That's the electric Himalayan out here in front of us. तो आज इस बाइक के बारे में थोड़ी इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे, दिखाऊंगा आपको इसके बारे में बाकी सारी चीजें। बने रहो चैनल पे। और एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के साथ प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड दैट्स आवर इंस्टाग्राम आईडी एट द कॉर्नर। प्लीज डू ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। So guys, when we talk about Himalayan, the first thing that comes to mind is roads or no roads, it doesn't matter. Then also what matters the most is the reliability of the bike. तो अब इधर आप आओ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि रॉयल एनफील्ड हैज गॉन अहेड। इस बार बाइक में जो टिपिकल डुअल आपको मिलते थे मड गार्ड्स वो हटाए हैं, यहाँ पे सिंगल मड गार्ड किया है। This has been upgraded to performance disc brakes and the tire has been upgraded. And यहाँ पे जो टायर्स यूज किए गए हैं फिलहाल ये मुझे Bridgestone के दिख रहे हैं। So Bridgestone is actually a very reliable brand in terms of tires, and this is the very first time कि Royal Enfield is playing with a Bridgestone tire here. उसके बाद अब आप यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा इधर की साइड आते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यूएसडी सस्पेंशन का यूज किया गया है। एंड यस, वन थिंग आई कैन अश्योर यू, दिस यूएसडी सस्पेंशन इज मच मोर bigger and better in terms of its performance than the previous ones. And yes, it is electronically adjustable. Now when we come up here, what you see here is a Brembo brake calipers here. We don't know whether it would be on a production bike or not, but yes, the calipers used here are Brembo calipers, which are also electrically adjustable. Then what you see here is a different LED lamp. The LED lamp is absolutely different from what you see. You see a small windshield here. And now let's come to the back. Now let's look at the console of this meter. So if you see the meter console out here, it is absolutely different. एक बड़ा अलग तरीके का मीटर यहाँ पे यूज किया गया है। प्लस it does not carry a conventional key. I think there would be a very different lock, probably a magnetic lock or something of that sort, जो कि यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये देखिए, it goes like this somewhere inside out. Switch gears again remain the same that were there in the previous versions, and the whole bike over here is at the moment camouflage, so probably we will be expecting something good out of its shoe, but it hasn't come up yet. Then if you come towards the rear, you see a monoshock suspension here, and the tires again are a Bridgestone at the back, and these are massive tires. Guys, I would not take a doubt to say that these are really massive tires. Then I think the Himalayan's accent over here in terms of brake light and indicators have still been retained, and this seems to be a swing arm of the bike which is out here. Although this is not a production model, this is still a prototype, so we expect that this bike would get much more better aesthetically when it comes to the market. But यहाँ पे अगर आप देखो तो फिलहाल इसके अंदर है, इस पोर्शन के अंदर है आपका पूरा बैटरी पैक एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आई डू थिंक, एंड the ground clearance of the bike, yes, it still retains the qualities of the Himalayan 450 or 411, whatever you say. And I do feel that this bike is definitely going to be a game changer for Royal Enfield out here, because just look at the bike, man. It gives you a feel कि ये कुछ बहुत ही अलग है. Although this is not a production ready bike yet, so a bike which is not production ready, you cannot comment on it. But what I see over here is a few common things like the toggle switches, like the mode switches.
So I think they would be there in this particular bike. But yes, I would say this is going to be absolutely a game changer bike for the Royal Enfield. And please do let me know in your comments how do you feel about this bike. But according to me, अगर ये production ready model है और इसमें थोड़े बहुत aesthetic changes हैं, तो this bike is going to be a wow. So ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे. सो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे, एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को, एंड आई विल सी यू गाइस सून. टेक केयर. विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे. मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. गुड बाय.